Hello learners, welcome to the digital learning platform Unfold You. I am Neeti Dogra, your business studies mentor. Today in Organizing, we are going to do centralization and decentralization. So let's get started. So centralization, it refers to the concentration of authority at the top level, that is in a few hands. जब जो अथॉरिटी है आपकी, आप सबके साथ नहीं शेयर कर रहे हो, आप यू आर कीपिंग इट एट द टॉप लेवल, दैट इज़ नोन एज सेंट्रलाइजेशन. दैट इज़ जब हमने पार्टनरशिप देखा था तो पार्टनरशिप में या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था, सोल प्रोप्राइटर इज़ अलोन डूइंग एवरीथिंग हिमसेल्फ. तो उसमें क्या है, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वो अकेला वही कर रहा है, इट्स नॉट शेयर्ड विद एनीवन एल्स. सिमिलरली पार्टनर्स में भी मे बी कुछ पार्टनर्स ही करें, बाकी के ना करें. सो दैट इज सेंट्रलाइजेशन. An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of the top management only. Then decentralization. Decentralization क्या है? It is defined as even and systematic distribution of authority at different levels of management. जब आप डिफरेंट लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल पे शेयर कर रहे हो आप अथॉरिटी, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. Every employee at different level gets some share of authority. Decentralization is a policy and the managers decide in advance whether to go in for centralization or decentralization. It is not that one should go in for decentralization. ये managers पहले से ही decide कर लेते हैं कि उनको centralization रखनी है या decentralization. Sometimes organizations follow a mixed policy of centralization and decentralization, where important financial and structural decisions are kept with the top management and other common decisions are shared. आजकल जो ज़्यादातर organizations में क्या हो रहा है कि there is a mix of centralization and decentralization. और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जैसे फिनेंशियल डिसीजंस हो गए या पॉलिसी मेकिंग हो गई, वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहते हैं, एंड बाकी के डिसीजंस जो रूटीन डिसीजंस हैं, दैट दे आर शेयर्ड विद द सबऑर्डिनेट्स और द अदर लेवल्स. रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन में आप क्या कर रहे हो, आप काम असाइन कर रहे हो, काम दे रहे हो दूसरों को. सेंट्रलाइजेशन में यू आर अगेन डूइंग द सेम थिंग. सिस्टमैटिक डेलीगेशन लीड्स टू decentralization. In delegation, the authority is shared with two people, that is manager and the subordinates, whereas in decentralization, many people at the different levels are involved. Example, directors, production heads, managers, then subordinates, etc. Delegation is necessary in every organization, but decentralization is optional. Delegation is essential part of every organization. No organization can work without delegation, as there is no single individual who can do the entire work of the organization. अब क्या है कि डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एम्प्लॉई या एक सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सके, इसलिए काम असाइन करना पड़ता है दूसरों को. सो डेलीगेशन इज़ मैंडेटरी बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट डू एंटायर वर्क बाय हिमसेल्फ. Delegation is a tool to get the work done efficiently and effectively by the others, whereas decentralization is required when the organization grows and expands and only the top management alone cannot manage it. अब decentralization कब ज़रूरी होती है? ज़रूरी नहीं है जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो तभी आपको because that time the organization may be small. So but when the organization grows and expand, that time decentralization is required. Otherwise, if it is small and it is not growing and expanding, then you can go in for delegation only, which is very, very important. Now we will revise what we have learned. When the decision making is pushed to the lower level, it is A. Delegation, B. Decentralization, C. Centralization, D. None of these.
So जब आप लो लेवल पे डिसीजन मेकिंग पुश कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज बी decentralization. Decentralization is optional. B automatically arises. C compulsory. D none of these. Now decentralization is optional, A, and delegation is required. Decentralization helps to make employees responsible. B, develop a feeling of belongingness. C, both A and B. D, none of these. So decentralization makes the employees feel responsible क्योंकि उनको काम दिया गया है, so they feel important and they also develop a feeling of belongingness. So both A and B, that is option C, is correct over here. Students, with this we come to the end of this session. In case you have any doubts, please feel free to ask them in Ask Your Doubt section. Till then, keep studying well. Goodbye.